हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक और नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो जी बच्चे बस सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं और स्नो पड़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा दरख्त पे, आपको जैसे नज़र आ रहा होगा। और करो बच्चे जो है फुली पैक्ड हुए हुए हैं और वो दुआ करो। जो बच्चे हैं वो हर चीज़ को फील करना चाहते हैं। अब ये दरख्त पे स्नो पड़ी हुई थी, वो उसकी ब्रांचेस को खींच रहे थे और वो स्नो गिर रही थी और वो मज़ा कर रहे थे। तो बच्चों की बस अपनी ही एक अलग दुनिया होती है। तो जी चलें चलते हैं। और अब हम जा रहे हैं ज़रा आइकिया। आइकिया से मैंने इंडोर प्लांट्स कुछ लेने थे, तो इस वजह से हम लोग वहाँ ज़रा यार वैसे विज़िट तो करके है आते नहीं हैं ये दूर तक और मुझे ना नजर फिर पड़ती है देखते कि हैं ये और दरअसल एंड तक ये मेरे सरू साथ ही है रहिए। सारा। प्लीज मैडम। नहीं वो स्पीड आ रहा था उसके लिए। What are we getting from IKEA? So we'll see. Then finally we'll get an ice cream. Hey, hey, hey. Mama, do they make Mama, do Oh man. जी बता रहा।
गाड़ी यार पहले पेट्रोल डलवा ली। करेंगे तो लोग बाहर निकलेंगे। अभी जो अगला too much snow guys। वो देखे सब मौसम बदल रहा है अल्लाह ने अजीब ही लेकिन जी हम लोग आ गए हैं वापस क्योंकि रोड कंडीशंस भी इस काबिल नहीं थी कि हम लोग ड्राइव कर सकते और स्नो भी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हमने सोचा कि वापस चलते हैं। तो हम लोग वापस आ गए हैं घर थोड़ी सी ड्राइव के बाद। तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और स्नो भी आपने काफ़ी इंजॉय की होगी। बहुत ही खूबसूरत मंजर था माशाल्लाह से, लेकिन सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी, -25-26 तक टेम्परेचर था। तो चलें जी, अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।